जीतने के लिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या जानते हैं? डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार के जोखिम पर आधारित होते हैं। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आपने ये डिस्क्लेमर कई बार सुना होगा और सुनकर डर भी गए होंगे और इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड्स के नाम पर यही सब नजर आता होगा, है ना? पर ये जानकारी म्यूचुअल फंड्स और उसके फायदों की असलियत से मीलों दूर है। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कई इन्वेस्टर्स से रकम इकट्ठी करके उससे सिक्योरिटीज खरीदता है। ये समझिए कि इसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस के अलावा एक एसेट क्लास के अंदर डाइवर्सिफाई करने का मौका भी मिलता है और इन्वेस्टर्स को दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ता क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट एक्सपर्टीज की मदद का फायदा मिलता है। समझे? चलिए हम एक आसान उदाहरण लेते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आप अपनी बाइक से जा सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहला तरीका चुनते हैं तो सब कुछ आपके नियंत्रण में होगा, जैसे सफर का समय, कहां से कहां तक जाना है, रास्ता, रफ्तार वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है दो शर्तों पर। पहली ये कि आपको बाइक चलानी आती हो और दूसरी ये कि आपका पूरा ध्यान उसे चलाने पर रहे। दूसरी तरफ अगर आप बस पकड़ते हैं तो हो सकता है कि रास्ता आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है रास्ते भर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ने की, बिना ड्राइविंग की चिंता करते हुए। यही नहीं, आपके काफी पैसे भी बचते हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कीम को हम एक बस की तरह मान लेते हैं। ये एक ऐसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव साफ दिखाया जाता है, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना। और इसे बहुत ही कम लागत में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। और अगर स्कीम के ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर की जरूरत के मुताबिक हो तो वो उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर अपनी रकम को मैनेज करने का काम आउटसोर्स कर देता है। फिर फंड मैनेजर का काम है उस रकम को दिए गए ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स को चुनने के लिए रिसर्च करना, पोर्टफोलियो बनाना, इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखना, जरूरत पड़ने पर उन्हें फेर बदल करना वगैरह। जाहिर है कि ये सभी सेवाएं मुफ्त में नहीं मिलती। अपनी बाइक पर सफर करना उसी तरह महंगा पड़ता है जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बस पकड़ने जैसा है, जहां सफर का खर्च कई हिस्सों में बंट जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम में सारा खर्चा इन्वेस्टर्स में उनकी इन्वेस्ट की हुई रकम के हिसाब से बांट दिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि वो ये तय कर सकें कि इन्वेस्टिंग कब शुरू करनी है और काफी मामलों में ये कि इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कब करने हैं। ये खूबी म्यूचुअल फंड्स को फाइनेंशियल गोल्स प्लान करने के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाती है। एक बार इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल गोल्स और जरूरतों को समझ ले, रकम और टाइम होराइजन निश्चित कर ले, तो वो बड़ी आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने वाली स्कीम चुन सकता है। डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड्स को समझना उतना मुश्किल नहीं जितना आप समझते हैं। और अब आप जान गए हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, तो उनमें इन्वेस्ट करके उनके फायदों का पूरा लाभ उठाइए। तो अब म्यूचुअल फंड्स के डिस्क्लेमर से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। एसेट क्लासेस को समझें। तो आप इन्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं और आप उसे कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। तो शुरू कहां से करें? सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके लिए आप कितनी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने पैसों को लेकर किस हद तक रिस्क उठा सकते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो अगर इन्वेस्ट करने से पहले आप सामने मौजूद अलग अलग एसेट क्लासेस के फायदे और नुकसान नहीं समझ पाए तो अपने ऑब्जेक्टिव्स पाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में आपको हमेशा नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। ये एसेट क्लास क्या है? रोजाना हम कौन से गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल फोन हो गया, लैंडलाइन है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, रेडियो, कैमरा, माइक्रोवेव और भी न जाने क्या क्या। जितना ज्यादा ढूंढेंगे उतना ज्यादा पाएंगे। MP3 प्लेयर्स, स्पीकर्स, वीडियो गेम्स, रेफ्रिजरेटर्स, ढेरों चीजें हैं। अब इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जिनमें समान विशेषताएं हैं। फोन करने के लिए आप मोबाइल फोन और लैंडलाइन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरी तरफ MP3 प्लेयर, कंप्यूटर, टीवी या रेडियो, इन सब में म्यूजिक बजता है। लेकिन अलग अलग देखें तो हर गैजेट खास है। एक एसेट क्लास भी यही होता है। ये उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से मिलकर बनता है जिनकी विशेषताएं काफी समान होती हैं। हालांकि कुछ मामलों में कई विशेषताएं हद से ज्यादा एक सी हो सकती हैं, लेकिन देखा जाए तो हर एसेट क्लास अपने आप में खास होता है। मतलब एक एसेट क्लास की जगह दूसरा पूरी तरह से नहीं ले सकता। जरा सोचिए, क्या एक रेडियो टीवी की जगह ले सकता है, जबकि म्यूजिक तो दोनों में बजता है। लेकिन फिर हम अपने फेवरेट टीवी शोज कहाँ देखेंगे? एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कई एसेट क्लासेस को जोड़ने से बनती है। इन्वेस्ट करने के लिए पहले एक एसेट क्लास चुनिए, फिर उस एसेट क्लास में मौजूद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखिए। कोई भी एसेट क्लास पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। जिसे भी चुने अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक चुने, न कि इसलिए कि वो सबसे बेहतर माना जाता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ की एसेट क्लासेस की अच्छाइयों और बुराइयों पर नजर डालते हैं। अगर इन्वेस्टर मूलधन की सुरक्षा चाहता है या चाहता है कि जब चाहे उसे पैसा मिल जाए, तो कैश एसेट क्लास उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये रकम या तो नकद हो सकती है या उसी के बराबर कैश जो कि बैंक सेविंग्स अकाउंट में जमा हो, जिसे कभी भी ATM से निकाला जा सकता है। कैश बहुत जरूरी है, सच है। मान लीजिए बीच रास्ते में आपकी कार खराब हो जाती है। अगर जेब में कैश हो या आसपास कोई ATM हो तो आपको फौरन मदद मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसी या इससे भी बड़ी कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास कुछ भी इंतजाम करने का वक्त नहीं होता। उस वक्त सिर्फ कैश की ही ताकत काम आती है। पर अपने कैश के साथ चिपके रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप इन्फ्लेशन से नहीं बच पाते और लंबी अवधि में इसके रिटर्न्स बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले कम होते हैं। इसीलिए तो बाकी एसेट क्लासेस बने हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स बॉन्ड्स की तरह होते हैं, जिसमें मूल रकम बढ़ती रहती है और लंबी अवधि में इनके रिटर्न्स कैश एसेट क्लास से कहीं ज्यादा होते हैं। पर इसका नुकसान ये है कि कई बॉन्ड्स में इन्वेस्टर को वादे के मुताबिक इंटरेस्ट नहीं दिया जाता और कई बार तो मूल रकम तक वापस नहीं मिलती। खतरा तो है, लेकिन अगर इन्वेस्टर ऐसे बॉन्ड्स लेगा जिनमें रिस्क कम है तो उसे लोअर रिटर्न्स से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। दूसरी एसेट क्लास जिसमें लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की ताकत है, जिसे लिक्विडेट करना आसान है और जो इन्फ्लेशन को भी मात दे सकता है, वो है कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, जो इक्विटीज के नाम से भी मशहूर है। मगर इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए कैश या बॉन्ड से कई गुना ज्यादा जानकारी वाले की जरूरत पड़ती है। इक्विटी प्राइसेस पर फ्लक्चुएशंस का असर पड़ता है और किसी भी दबाव में गलत समय पर बिक्री करने से नुकसान हो सकता है और इक्विटी मार्केट में मंदी भी लंबी खिंच सकती है। जो इन्वेस्टर्स फिजिकल एसेट्स की तलाश में हैं, उनके लिए रियल एस्टेट एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ये दिमागी तौर पर तो सुकून देता ही है, साथ ही लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स देने की ताकत भी रखता है। लेकिन रियल एस्टेट का मापतौल मुश्किल है, जिसमें सिर्फ एक जानकार ही बता सकता है कि जो इन्वेस्टर्स ने खरीदा है वो कितना वैल्यू फॉर मनी है। और चूंकि इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है, इसलिए इन्वेस्टर्स की खरीदने और इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने की क्षमता सीमित रह जाती है। हाई मेंटेनेंस और लिक्विडिटी इस एसेट क्लास के कुछ और नुकसानदायक पहलू हैं। कई और तरह की भी एसेट क्लासेस हैं, जैसे गोल्ड, कमोडिटीज, कलेक्टिबल्स वगैरह वगैरह। एसेट क्लासेस काफी ज्यादा और कई तरह की होती हैं और ये शायद ही मुमकिन हो कि कोई एक एसेट क्लास आपकी सभी जरूरतें पूरी कर सके, पर मिलकर ये आपकी ज्यादातर गोल्स को पूरा कर सकती है। बाहर जाएं तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, अपने शोज को देखने के लिए टीवी का, कहीं भी काम करने के लिए लैपटॉप का, फूड स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर का और उसी खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का। एक बार सभी एसेट क्लासेस समझ में आ गए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक कॉम्बिनेशन बनाकर उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो पैसे का करे विकास अपनी सुविधा के साथ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए सही फंड का चुनाव। घर में छोटे बच्चे हैं तो कई चीजें सोचनी पड़ती है, कई जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। आज बच्चों को जरूरत है खिलौनों, किताबों, कपड़ों वगैरह वगैरह की, पर कुछ दिन बाद उन्हें जरूरत पड़ेगी अच्छे स्कूल की, हॉबी क्लासेस, स्पोर्ट्स और वर्कशॉप्स की, क्योंकि इन्हीं की मदद से तो उनके दिमाग और व्यक्तित्व का विकास होगा। आप उनके भविष्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको उनकी हायर एजुकेशन और शादी भी तो प्लान करनी है। हाँ, पर ये तो कई तरह के गोल्स और खर्चे हो गए और आपको ये सब याद भी रखना है। और ये तो सिर्फ बच्चों की बात हुई। जिंदगी में अभी और कई तरह के खर्चे और फैसले बाकी हैं। कुछ बड़े फैसले, कुछ छोटे, कुछ बेहद जरूरी खर्चे, कुछ कम जरूरी। वैसे कितना अच्छा होता कि इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक ही हल होता, है ना? पर ये इतना आसान नहीं है।
दरअसल ये सभी फैसले काफी आसान हो सकते हैं अगर इन्वेस्टर एक आसान सी चीज समझ ले। जिस तरह अलग अलग समय सीमा के अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उसी तरह हर गोल के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी अलग होते हैं और उन फाइनेंशियल गोल्स को पाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनना बहुत जरूरी है। तो इन गोल्स को अलग अलग वर्गों में कैसे बांटा जाए? इन्हें दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक नेचर पर आधारित गोल्स और दूसरे वो जिनमें समय सीमा निर्धारित है। पर रुकिए, ये जान लीजिए कि जिन गोल्स को हम नेचर की श्रेणी में रख रहे हैं वो भी समय सीमा के बंधन से जुड़े हुए हैं। आप बच्चों को कॉलेज जाने की उम्र में खिलौने नहीं दे सकते, वो काम आपको आज ही करना होगा। और उसी तरह आप बहुत कम समय में ढेर सारा धन नहीं जोड़ सकते, उसके लिए लंबे वक्त इंतजार करना ही पड़ेगा। जी हाँ, इसीलिए इन्वेस्टर अपने गोल्स की लिस्ट बनाकर उन्हें क्लासिफाई कर दे तो वो अपने गोल्स को ज्यादा जरूरी, कम जरूरी, आज की जरूरत, कल की जरूरत के हिसाब से बांट सकता है। और इसी तरह गलत इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनने की जगह इन्वेस्टर अपने फंड्स पहले इम्पोर्टेंट और अर्जेंट गोल्स में लगाएगा और फिर बाकी चीजों में। ओके, सिनेरियो नंबर 1, आपके दो अहम लाइफ गोल्स देखते हैं। 10 साल में अपना घर और 15 साल बाद बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना। दोनों गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट में स्टेडी ग्रोथ जरूरी है, मतलब ये लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन गोल्स हैं। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर को इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, पर उसके लिए खतरा उठाने का दम चाहिए। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की लिस्ट से कुछ भी चुना जा सकता है, लार्ज, मिड, स्मॉल कैप या फिर सेक्टर फंड्स। सब कुछ उसकी खतरा उठाने की हिम्मत पर निर्भर करता है। इन्वेस्टर चाहे तो लमसम रकम से शुरुआत कर सकता है या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, यानी SIP से। ठीक है, दूसरा सिनेरियो देखते हैं। आज आपका लकी डे है, आपने अभी अभी एक गेम शो में 5 करोड़ रुपए जीते हैं। ये आंधी अचानक आई है और आपके पास इसे इन्वेस्ट करने का कोई प्लान नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? अपना पैसा किसी सेविंग्स अकाउंट में रखने की जगह उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है ये तय करने तक अगर आप उसे किसी लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेहद कम रिस्क पर अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब केस नंबर 3, चलिए आपके रिटायरमेंट के वक्त की तरफ चलते हैं। आपने एक कंपनी में 30 साल काम किया पर आपको पेंशन नहीं मिलने वाली, तो अब आपके पास रेगुलर सेविंग के 75 लाख रुपए हैं और अब आप अपने इन्वेस्टमेंट से रिटायर्ड लाइफ के लिए रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं। इस मामले में इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग हिस्सों में बांटकर जरूरत के मुताबिक इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में। अपनी लंबी जिंदगी को नजर में रखते हुए इन्वेस्टर किसी ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहेगा जिस पर एक अवधि के बाद इन्फ्लेशन का कोई असर न हो, जैसे लार्ज कैप इक्विटी या बैलेंस फंड्स। एक बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में लगाया जाए ताकि रोजमर्रा के लिए आमदनी पैदा हो। ऐसी कहानियों का कोई अंत नहीं। जिंदगी गतिशील है और पल पल बदलती है, पर चुनौतियों का सामना करने में ही तो मजा है। तो जिम्मेदारियों और फाइनेंशियल प्रेशर से दबना बंद कर दीजिए। मामला चाहे बच्चों के खिलौनों का हो, उनके हायर एजुकेशन का हो या आपकी रिटायरमेंट का, बस फाइनेंशियली प्लान करना सीखिए। आप गोल्स को अलग कर The financial advisory business is rapidly evolving from offering just sales-based advice to advice-based sales of financial products. Advice that ensures customers can avail of better performing financial products that offer higher returns and enhanced security. This advice that empowers financial advisors to offer quality services is based on an understanding of numerous factors that influence the performance of financial products. Understanding that is gathered through a deeper understanding and solid analytics. Ifan, shaping tomorrow's financial planners. Independent Financial Associates Network, Ifan, is a B2B distribution platform for financial products that supports its associates to enhance their advisory and client services with the help of innovative technology and unbiased research. Established in 2005, Ifan possesses over 75 years of combined work experience in the financial industry. Ifan was founded with a vision to establish itself as a reliable partner for business growth and higher profitability that empowers financial advisors in India with a comprehensive range of investment products and services by being a one point of contact for all financial product and asset classes. Ifan offers a web-based B2B financial products and services platform where financial advisors and distributors can gain access to services like basket of products, research, financial planning, e-Nivesh, online wrap solutions, portfolio monitoring,
CRM, commission management, training, financial planning, and trailer monitoring. It serves as an efficient, low-cost, plug-and-play model for advisors to scale up their business in a standardized manner. Ifan also offers professional back-office services for product research, marketing, and legal and compliance. Ifan provides efficient online access to its clients, enabling them to monitor all investments under one roof. Manufacturers can access Ifan's widespread professional associate network across the country. The greatest benefit that an associate of Ifan would hold is with Ifan's assistance, he would be in a position to grow his business both in quality and quantity. Ifan's research-based B2B platform offers various asset classes, covering mutual funds, debt, equity, real estate, home loan, LAP, and LAS to over 50,000 clients through a 1,000 plus dedicated associates network in 87 cities in India. The company has been ranked in top 50 distributors in India amongst over 90,000 distributors in mutual fund. Ifan also ranks amongst the top 5 distributors in company fixed deposit mobilization. Being a large institute and aggregator has an advantage to negotiate with financial product providers and thus offer higher short-term and long revenue to its associates. This also helps associates sustain their skilled manpower, thereby helping them increase their client base. As an associate starts increasing his network, he will have the potential to earn higher revenues across product classes. Ifan partners include a company that enables IFAs to gain greater efficiency and the ability to tap into economies of scale and at the same time help them deliver better service performance for their clients without increasing the cost. Ifan has taken the initiative to lead the change and facilitate a paradigm shift from the current sales-based advice to a more effective, advice-based sales model in the financial services sector. Ifan. और बेटा सेटल हो गए नई जॉब में? सैलरी आ रही है ना टाइम पर? हाँ अंकल, देखिए ना, मैंने पहली सैलरी से ये फोन लिया था। नेक्स्ट मंथ की सैलरी से पूरा वार्डरोब चेंज और सितंबर में ये वॉच खुद को बर्थडे गिफ्ट की थी। और तुमने अभी तक गाड़ी नहीं ली? बैंकॉक घूमने नहीं गए? अभी इतने पैसे बचते ही कहाँ हैं? बट अगले साल ये सब प्लान में है। और शादी? रिंकी के घर में तो अभी पता भी नहीं है, पर उससे पहले घर लेना पड़ेगा। रिंकी के पापा ना। लेकिन अगर अगले साल बैंकॉक, कार, तब तक ये फोन भी पुराना हो जाएगा। फिर एक और बर्थडे, एक और गिफ्ट, और तब तक रिंकी के पापा को पता चल गया तो ना आया घर, ना हुई शादी। तो क्या घड़ी होगी, कपड़े होंगे, शायद कार भी होगी, उसमें ही तुम्हारा दोस्त तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा, तुम बैंकॉक चले जाना। अंकल, आप तो डरा रहे हो। ना ना, बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें शादी से पहले घर लेना है और इसके लिए पैसे बचाने पड़ेंगे। न सिर्फ बचाने पड़ेंगे बल्कि इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आज मेरे पास सीमा भी है, घर भी, कार भी, और ये घड़ी मैंने लंदन से ली थी। अंकल, 2-3 हजार बचा भी लिए तो उससे क्या घर आएगा? 2-3 हजार कम होते हैं क्या? शुरू तो करो। बट इन्वेस्ट कहाँ करूँ? तुम शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गोल्ड, इन सब में इन्वेस्ट करो। अंकल, इन सब के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। इन सब में इन्वेस्ट करने का आसान तरीका है म्यूचुअल फंड्स। मतलब? तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को फंड हाउस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के मुताबिक अलग अलग कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। बट अंकल, ये सेफ तो है? म्यूचुअल फंड स्कीम्स को प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। इनकी कोशिश ही यही रहती है कि आपकी रिस्क कम करें और अच्छा रिटर्न दिला सकें। तो अंकल, देखा जाएगा, लगा दो दाव। अरे हीरो, यहाँ बात मरने मारने की नहीं है, इन्वेस्टमेंट की है। तो हमेशा सोच समझकर, और जब रिंकी के पापा को पता चलेगा ना कि तुम ये सब कर रहे हो, अरे खुद तुम्हारे घर आएंगे बात करने के लिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. अब सही रास्ते पर हैं, या कहें कई रास्तों पर।
डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए कई प्रकार की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, यानी आपके अनेक दुखों की एक दवा म्यूचुअल फंड्स। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। चुनाव सही फंड हाउस का। जब आप अपनी बिटिया के लिए स्कूल ढूंढते हैं तो वहाँ एडमिशन लेने से पहले कई तरह की तहकीकात करते हैं, है ना? आखिरकार सवाल आपकी बिटिया के भविष्य का जो है, आप कोई खतरा नहीं उठाते। उसी तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है, जिसकी शुरुआत होती है सही फंड हाउस को समझने और उसे चुनने से। फंड हाउस म्यूचुअल फंड में लगने वाली रकम को मैनेज करता है। हर स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वो स्कीम में इन्वेस्टर्स की जमा की हुई रकम की मदद से अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाता है। चलिए देखें अपनी बिटिया के लिए परफेक्ट स्कूल चुनते वक्त आप किन चीजों पर ध्यान देंगे। हर पहलू मजबूत होना चाहिए। आप चाहेंगे एक रेप्यूटेबल स्कूल जिसके बारे में हर कोई जानता हो और बातें भी करता हो। फिर आप स्कूल के रिव्यूज जानना चाहेंगे ताकि आपको उसकी उपलब्धियों के बारे में अंदाजा लग जाए। फिर आप ध्यान देंगे लोगों के पर्सनल रिव्यूज पर, जैसे स्कूल की खूबियों के बारे में पेरेंट्स की क्या राय है। फाइनली आप खुद स्कूल का दौरा करके इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर अपनी राय बनाना चाहेंगे। इसके अलावा जिन चीजों पर आप ध्यान देंगे वो होंगी स्कूल फीस, टोटल कॉस्ट, एडमिशन प्रोसीजर, इवैल्यूएशन मेथड वगैरह वगैरह। अपनी बेटी के लिए स्कूल चुनते वक्त आप ये ध्यान रखते हैं कि आपकी बेटी की एजुकेशन की जरूरतें पूरी करने में वो स्कूल समर्थ हो, क्योंकि आपके लिए उसका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। जो सावधानी अपनी बेटी के लिए स्कूल चुनते वक्त माँ बाप बरतते हैं, वही सावधानी एक सही फंड हाउस ढूंढते वक्त हमें बरतनी चाहिए। और उसके लिए कई ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देने से हमें फैसला लेने में भी आसानी होगी और फायदा भी ज्यादा मिलेगा। AMC के स्पॉन्सर्स कौन हैं? उनका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में और उससे जुड़े बिजनेस में ग्लोबली और इंडिया में कितना अनुभव है? क्या मार्केट के उतार चढ़ाव के दिनों में इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का उनका कोई मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है? क्या उनके पास स्टेबल और रिप्यूटेड फंड मैनेजमेंट टीम है? वो आजकल जिन एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं उनका कुल साइज क्या है? क्या उनका इक्विटी और फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज के बीच अच्छा संतुलन है, या फिर वो खुलकर किसी एक का साथ दे रहे हैं? उनके फंड परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? क्या उनकी वेबसाइट और उनके बाकी प्रोडक्ट्स की जानकारी लाभदायक है और आसानी से उपलब्ध है? बिजनेस एंड फाइनेंशियल मीडिया की फंड हाउस, उनकी टीम और उनके फंड्स मैनेजमेंट के बारे में क्या राय है? AMC की ग्राहक सेवा और शिकायतें दूर करने का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा है? और इसी तरह की बाकी सभी बातें। ओफो, इतनी सारी जानकारी, जबकि आप तो ये भी नहीं जानते कि ये सब मिलेंगी कहाँ पर। चिंता मत कीजिए, आपको सारी जानकारी इन जगहों से मिलेंगी। आप AMC के वेबसाइट्स और पोर्टल्स देख सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल पब्लिकेशंस, और फिर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एम्फी भी तो है। इनके अलावा ज्यादातर फंड हाउसेस में मंथली फैक्ट शीट्स भी छपती हैं। AMC द्वारा छपवाए गए स्कीम से संबंधित दस्तावेज, और आप जब चाहें तब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास भी जा सकते हैं। तो देखा आपने, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे समझदारी से ही लेना चाहिए। एक बार आपने सही स्कूल चुन लिया तो फिर आपकी बेटी सही हाथों में रहेगी। बिल्कुल यही बात होती है इन्वेस्टमेंट्स और फंड हाउसेस पर। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना होमवर्क जरूर कर लें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। इन्वेस्टमेंट में देरी का नुकसान। मान लीजिए आपको तैरने का बहुत शौक है और आप समंदर में तैरना चाहते हैं, पर लहरों को देखकर आप रुक जाते हैं और अंदर जाने में आपको डर लगता है। उम्मीद है कि आप उन लहरों के थमने का इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप इंतजार करते रह जाएंगे और तैरने का एक सुनहरा मौका आपके सामने से गुजर जाएगा। सच है, ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसी तरह के होते हैं। वो लहरों के थमने का इंतजार करते हैं, क्योंकि या तो वो रिस्क से डरते हैं या फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट के सही वातावरण की जानकारी नहीं होती। अगर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तेजी से हो रहे हों, तो वो उसके थमने का इंतजार करते हैं, या फिर उन्होंने अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कारण जो भी हो, समस्या एक ही होती है, डिले इन इन्वेस्टमेंट।
तो होता कुछ इस तरह है। मान लीजिए आपका एक दोस्त 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। 10वां साल खत्म होने पर उसका इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपए। 15% प्रति वर्ष के रिटर्न के हिसाब से आपका दोस्त 27 लाख से ज्यादा रुपए जमा कर लेगा। दूसरी तरफ आप लहरों के थमने का इंतजार कर रहे हैं, पर वो थमती नहीं। लेकिन अपने दोस्त की लगातार बढ़ती हुई पूंजी देखकर आप में भी पानी में उतरने का थोड़ा साहस पैदा हुआ। तो आपने इन्वेस्ट करना शुरू तो किया, पर आप 5 साल खो चुके हैं। इसलिए बराबरी करने के चक्कर में आप अगले 5 साल तक हर महीने दुगना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आखिर में पैसा तो आप भी उतना ही इन्वेस्ट करते हैं, पर 5 साल बाद आपको 18 लाख से कुछ कम रुपए मिलते हैं। मतलब आपको देरी की कीमत चुकानी पड़ी। इससे बचने के लिए आपके पास बहुत कम रास्ते हैं। या तो आप हर महीने अपने दोस्त से 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करें, या बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद करें। ऐसे रिटर्न्स की उम्मीद पूरी तरह से नामुमकिन तो नहीं है, पर आपको जोखिम ज्यादा उठाना पड़ेगा। जानना चाहेंगे कि आपके दोस्त को सिर्फ जल्दी इन्वेस्टमेंट करने का फायदा कैसे हासिल हुआ? इस सिद्धांत का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये बहुत ही आसान है। एक छोटी रकम जब एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट की जाती है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से वो एक अच्छी खासी बड़ी रकम में बदल जाती है, क्योंकि इससे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड होता है। और जितने लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टर बना रहता है, ये उतना ही बढ़ता चला जाता है। चलिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप 1 साल के लिए 50,000 रुपयों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस पर आपको 10% ब्याज मिलता है। तो 1 साल बाद वो हो जाएंगे 55,000 रुपए। मान लीजिए आप ये रकम उसी ब्याज दर पर एक और साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो दूसरे साल के अंत में आपके पास जमा होंगे 60,500 रुपए। अगर ये सिलसिला अगले 10 साल तक चला तो आखिर में आपको मिलेंगे 1,25,000 रुपए से भी ज्यादा, जो सिर्फ 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली अच्छी खासी रकम है। दूसरे शब्दों में कंपाउंडिंग का मतलब ब्याज पर मिलने वाला ब्याज। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट में फायदा पाने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि कितनी रकम इन्वेस्ट की जाए, बल्कि ये भी जरूरी है कि कितने समय के लिए की जाए। यानी इन्वेस्टमेंट जितना उतना ही अच्छा। लगातार इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट में बने रहें। लहरें देखने में वक्त बर्बाद ना करें, सीधा डुबकी लगाएं। समंदर के पास देने के लिए बहुत कुछ है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। Like to throw a slightly different perspective before we get started, and maybe Manish, you could kind of help me on this. Is you have spoken about digitization to creditization in one of the pieces you did for us, and data playing a big role in how this can happen, or probabilities that you shared there. How much do you think this entire process of digital money coming in will help in evaluating a person's credit and getting the credit business going on? The short answer is it'll help, but the ways in which it'll evolve is difficult to predict at this point. So this is a first step forward. So let me just elaborate a bit. So digitization starts creating an information footprint, right, about customers. But as you go forward, the reason why digital transformations or disruptions happen is multiple things, right? Broadly, there are 3 things that drive it. One of them tends to be very simple, it's cost, right? The second is speed, right? And the third is data. By and large, data and insights tends to be the biggest, right? But I would say cost and speed tend to be one of the biggest amongst the other 2 big enablers. Now, if you just elaborate on how much this first step forward is going to help in all these 3 directions, it will help, right? I mean, does it create enough data, enough of a data footprint where I start understanding the customer better? It's difficult to say, you know. I mean, it's a very asymmetric, a very patchy use of data footprint that gets created. And that's not to say that I don't get to know more. It's just that what I get to know is not that usable at this point, right?
Now, secondly, cost. I mean, it's a fact. You know, when you start moving some of these transactions online, see, at this point, I think someone used the word, used the number about 150, 170 basis points for every transaction. That's very accurate, actually. It costs about that much to do a digital transaction. But some of the new trends that I'm seeing at the moment, they're shrinking some of the transactions costs down to about 40, 50 basis points. So the cost benefit is also coming, right? And that leaves us with the third, which is speed. I think ultimately speed will absolutely happen. Again, to what extent it's going to help and move it forward, is again difficult to tell. You know, to the extent you're taking decisions, you get all the data available with you. You know, speed is enabled. But there's always that last bit of decision that's needed. You know, and anyone who wants to sort of, you know, take a mortgage, you know, would experience this. All that's happened is, instead of 10% of the things happening fast, 60% of the things happen fast. But that remaining 40% still needs to be completed. So, you know, it doesn't sound wildly optimistic when I say too early to tell, but that's, in my opinion, the fact at the moment. I'll kind of put this as a context of, I was interacting with some data scientists, and one of these gentlemen works with a very leading bank, private sector bank, and his point was, it becomes very difficult for us to explain to them that the kind of data that you're collating and expecting us data scientists to throw up something which is interesting, which is what, or you're looking for some new ways that you can enhance the service or experience. But effectively, every day the goalpost is changing as much as the goal itself is changing. So I'm sure all of you experience, or in some way are kind of in that situation today, that there is too much of information flow either from the consumer, which you already have, or data which is available otherwise, which you're kind of consuming and trying to either develop products or improve services. So how do you grapple with something like this, Mohit, if you could? Okay, I think it's a problem of plenty. Exactly. So I think in our category, I represent a life insurance company. I think the fundamental of life insurance is to understand data, right? And data pertaining to how lives perform over a period of time, how our customer bases have performed. I think data is very, very important, but if life insurance has, whether life insurance has evolved in terms of using data and using high-end predictive techniques to be able to extrapolate future projections and create new market segments, etc., I think there is a long way to go. So we are looking at data, in bite size. So we look at data separately when it comes to serving our customers. So existing customers form a large part of our portfolio. Possibly 2/3 of our annual premium income is aligned to existing customers because they keep paying their annual premiums. So we analyze data and we use that data to our advantage to be able to win back customers, because life insurance also suffers this problem of people signing up new contracts but not continuing the long-term relationship. They end up exiting for whatever reasons. Second year, third year onwards. So we use data intelligently in that sense to be able to slice it into smaller bites and then go after the bases and win them back. I think that's the large application. The other area where we have started implementing data, and I would not say it's data, but it's more consumer behavior, is in the social space. So being a marketer myself and a big believer in digital, so at Excite Life we are studying what consumers are actually, how consumers are behaving on the social space. And social here is not only about Facebook and Twitter, it's the overall internet where they are having conversations and they are stating their problems, they are seeking solutions, they are sharing their views. So we are actually now listening to all that information, and we are bucketing them, and we are trying to create actions which are essentially actions towards engaging with those people and create new conversations with them so that they can look at our organization, our brand, for a potential service that they need to look at. So I think that's where our play on data is for now. Would you like to share something on this? A panel on digital always makes us feel, I represent a health insurance company, always makes us feel that we are still in the nascent stage.
and there's a lot to be done. And a health insurance business at this point of time, more than 80% depends on eye-to-eye contact in India. But actually, we foresee a very great future in the underwriting front, in the marketing front, and in the submission of claims. Because as we facilitate the service of claims by digital means, I think insurance can penetrate in a very big way. And this is the era of saving electronic health records. We talk about digitization in hospitals, electronic health records, but this is seen only in the metros. For example, we have around 8,000 plus hospitals networked with us. 2/3 of them are novice in this area. And very difficult for us to insist on a discharge summary which is electronically generated. So they because our services depends on the competence of the digital competence of the service providers, I mean the hospitals. So in the health insurance front, it is increasing, online businesses are growing, but still it is in single digit, the contribution is single digit. Maximum business generation or on the service front, still I was talking to my regional head this morning. A company of our size, we are spending more than 100 crores on stationaries, which most of it can be avoided if on the service front also, we get customers who upload their documents and send to us digitally, and we can process. Actually, we are moving into a paperless transaction, but still, now what happens? The customer submits everything in big bulks and papers. We upload all of them, and then we do digitally. And then we save these documents in our godown or whatever it is, according to the regulator compliance. So these things are makes us feel that we should have more acumen on digitization, because it's going to help us in analytics in a big way. Unless we start doing the digital analysis and innovating newer products, health insurance cannot penetrate. So for analytics, and number two, as he said, engaging the customers, 90% of our customers, we feel that they should renew with us, and we have a renewal retention of around 90%. And to achieve this on a long-term basis, we need to constantly engage our customers. So engaging our customers who are healthy otherwise, who have a health insurance policy, but they have not utilized it so far. So, and promoting wellness on these customers, we depend on digital for this. We have a customer base of around 68.23 lakhs. And engaging these customers, we need to look at digital means and retrieving the data, electronic data of these customers and maintaining an electronic health record. And then trying to give outpatient. Now the industry is looking at a comprehensive coverage. But for outpatient care, today people have to go all the way, fix an appointment, visit a doctor, and this can also be facilitated digitally. If we start doing that and start guiding the people, we can also reduce our loss ratio. Digitization can help us to reduce the loss ratio. Digitization can help us to attract our institutional customers, group policy holders, and engage them in the right way. But only thing is today 8 to 9% of the business hardly comes through web sales, web aggregators, online business in the health front, and still we depend on intermediaries, and we look forward to the transformation. I am from what I foresee by 2020 or 2021, 60% of the health insurance business are expected to happen through digital means. Wow. Abhijit. Yeah, I think panel has quite elegantly given its views on what digitization or digital does to businesses. I'm just trying to articulate it, and I'm just trying to think through. I think, and coming from an asset management company, I think it's a AAA movement for us, because and the AAA, I just kind of thought was what Mohit said in terms of awareness or creating audience. How do we, and the second A being automation is what we spoke about, and analytics or analysis, right? So the lens in which digital helps us to look at businesses in this AAA
framework is first create awareness, or marketers earlier had a traditional approach to advertising, marketing, etc., which is the get billboards, get campaigns, and then figure out whether who is looking at your ad or not. But what digital does is helps us to custom build our campaigns basis audience that we want to sharply target, and gives us this real-time feedback in terms of whether the campaign is working, not working, right? A lot of it is a resultant of the alpha beta testing that we do in terms of what works, what doesn't work, and it doesn't cost a lot of money, right? So to target that customer, so awareness is easily built. Automation, I think, right from a bank to a bullock cart farmer, right? Everybody is getting impacted with this whole digital thing in terms of automation, things moving quickly, convenience, easy use of technology to create a meaningful ecosystem in the journey of a consumer, right? And as we go on this journey, and what digital allows us to do is look at the customer from a customer experience journey point of view rather than silos in terms of, where did the customer look at us, where did the customer buy us, what is the consumer behavior when the customer is using these automated platforms, okay? And at the same time then put all this together and analyze not only the customer or the customer target set, but business as a whole, right? So reams and reams of MISs that people used to just try to make sense of is now easily adaptable in terms of a click and exactly what you want to know, and then get insight for future strategies on the business in terms of whether you want to save cost, whether you want to gain. The financial advisory business is rapidly evolving from offering just sales-based advice to advice-based sales of financial products. Advice that ensures customers can avail of better performing financial products that offer higher returns and enhanced security. This advice that empowers financial advisors to offer quality services is based on an understanding of numerous factors that influence the performance of financial products. Understanding that is gathered through a deeper understanding and solid analytics. Ifan, shaping tomorrow's financial planners. Independent Financial Associates Network, Ifan, is a B2B distribution platform for financial products that supports its associates to enhance their advisory and client services with the help of innovative technology and unbiased research. Established in 2005, Ifan possesses over 75 years of combined work experience in the financial industry. Ifan was founded with a vision to establish itself as a reliable partner for business growth and higher profitability that empowers financial advisors in India with a comprehensive range of investment products and services by being a one point of contact for all financial product and asset classes. Ifan offers a web-based B2B financial products and services platform where financial advisors and distributors can gain access to services like basket of products, research, financial planning, e-Nivesh, online wrap solutions, portfolio monitoring, CRM, commission management, training, financial planning, and trailer monitoring. It serves as an efficient, low-cost, plug-and-play model for advisors to scale up their business in a standardized manner. Ifan also offers professional back-office services for product research, marketing, and legal and compliance. Ifan provides efficient online access to its clients, enabling them to monitor all investments under one roof. Manufacturers can access Ifan's widespread professional associate network across the country. The greatest benefit that an associate of Ifan would hold is with Ifan's assistance, he would be in a position to grow his business both in quality and quantity. Ifan's research-based B2B platform offers various asset classes.
covering mutual funds, debt, equity, real estate, home loan, LAP, and LAS to over 50,000 clients through a 1,000 plus dedicated associates network in 87 cities in India. The company has been ranked in top 50 distributors in India amongst over 90,000 distributors in mutual fund. Ifan also ranks amongst the top 5 distributors in company fixed deposit mobilization. Being a large institute and aggregator has an advantage to negotiate with financial product providers and thus offer higher short-term and long revenue to its associates. This also helps associates sustain their skilled manpower, thereby helping them increase their client base. As an associate starts increasing his network, he will have the potential to earn higher revenues across product classes. Ifan partners include a company that enables IFAs to gain greater efficiency and the ability to tap into economies of scale and at the same time help them deliver better service performance for their clients without increasing the cost. Ifan has taken the initiative to lead the change and facilitate a paradigm shift from the current sales-based advice to a more effective, advice-based sales model in the financial services sector. Ifan. टिंटू, अलमारी के ऊपर से ब्राउन वाला बैग निकाल दो। ये तो बहुत ऊंचा है। मुझे ये क्यों बोलते हैं जबकि पता है कि मैं छोटा हूँ। मैं ही क्यों फंसता हूँ ऐसे चक्करों में। बैग निकाला क्या? पापा ये सही किया, ये लैडर सही है। चिंटू के लिए बैग निकालना उतना मुश्किल नहीं था जितना वो सोच रहा था। थोड़ी समझदारी एंड छोटे छोटे स्टेप्स आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। कहते हैं ना, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद वन सिंगल स्टेप। इसी तरह SIP के जरिए छोटे छोटे स्टेप्स लेकर फाइनेंशियल गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक बार SIP रजिस्टर करने से हर महीने आपके बैंक अकाउंट से फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता जाता है। इससे डिसिप्लिन वे में आपका इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक्ड होती है, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच आपका इन्वेस्टमेंट एक एवरेज कॉस्ट पर होता है। तो अब बड़े सपने देखो, चाहे छोटे स्टेप्स लो, शुरू तो करो। पापा, बड़ी वाली अलमारी के ऊपर से मेरे गर्म कपड़े निकालने हैं और लंबी लैडर लगेगी। हाँ, उसका भी इंतजाम है। ओ, आओ बड़ी सीढ़ी लगाते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. There once was a poet who fell upon such hard times that he was no longer able to feed his family. So he decided to set out for the palace and appeal to the generosity of the king. Upon being summoned by the king, he started reciting his poems. Wow. The king, well pleased, asked him to name his reward. Pointing to the finely wrought chessboard, the poet said, "Your Highness, if you place just 1 grain of rice in the first square and double it for every square, I will consider myself well rewarded." "Are you sure?" asked the king. "Just grains of rice and not gold?" "Yes, Your Highness." "So it shall be." So the courtiers started placing the grains of rice. 1 on the first square, 2 on the second, 4 on the third, 8 on the fourth square, and so on. By the time they came to the 10th square, they had to place 512 grains of rice.
By the 20th square, the number swelled to 5,24,288. When they came to the halfway mark, the 32nd square, the grain count was 214 crores, 74 lakhs, 83,648. Soon the count increased to lakhs of crores. Eventually, the hapless king had to hand over his entire kingdom to the clever poet. And it all began with one grain of rice. Moral of the story? Never underestimate the power of compounding. If you systematically invest a small sum every month, your SIP can grow to a very impressive sum when you retire. Sundaram Mutual, unearthing opportunities. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the statement of additional information and the scheme information document carefully before investing. Whether you want to get a target market. So I think, and what this, what's happened in the past couple of months or past 3 months is, actually what Kerry Packer did to cricket in terms of ODI, or what IPL did to India in terms of T20. So suddenly what's happening, and what we saw in the earlier panel, and what is the view on the street is, everybody is waking up to the fact that saying that, look, it is not about why digital, it is about what more I can do on digital. So, I know you have a very big digital team at your place. So, if I may, play it on that. How much of this information that you've been talking of goes towards improving services, as there have been some experiences that you can share, and how much of it actually also goes towards product development? Yeah, so that's a great question. Actually, a lot of heavy lifting actually goes in terms of creating consumer experiences or enhancing consumer experiences. While, and that's also a challenge. I mean, we spoke about problem of plenty in terms of data being there, a lot of insights being there, and as we try to create these experiences, what we have to be cognizant about is the consumer is actually spoiled for choice, right? In the digital economy, quite confused equally. Yeah, I mean, look at it. In the morning, the guy gets up in the morning, looks at his Facebook, WhatsApp app, takes a Uber to work. While going to work, maybe transacts on an iPro Touch or an ICICI app in terms of buying a mutual fund, or maybe looks at various things on Amazon, right? And so on and so forth. In the consumer journey, there are so many interfaces, so many applications, so many touch points that the consumer actually looks at. So it's a bit of a challenge for a lot of brands to solve for that consumer experience. But if the approach is right, in terms of solving these pain points, creating meaningful journeys, then a lot of this data comes handy. To your question, how much of it goes towards product development? A lot of it, because and a lot of our product innovations are a resultant of what we hear in terms of what the consumer wants. And at ICICI Prudential AMC, we have a lot of products which are industry leading in terms of whether looking at it from a customer point of view, in terms of how to help the consumer, in terms of maximize the cycle of investments, or in terms of giving the customer the right product. So a lot of that data goes in product development also. One thing which I would like all of you to kind of address is, you mentioned about the social footprint and social media which exists. It equally gives every consumer a very quick span to complain, a quick forum to generally kind of go and post that I didn't receive a premium receipt, I went for a claim, it got denied, I applied in a fund assuming that it's going to be posting X amount of returns, or I was sold something saying that this is the promise.
how do you kind of address this, all these issues? Because suddenly you're trying to ensure that all these complaints or all these kind of negative information which is flowing, that's what you're looking for, is addressed as well as it's checked. Sure. So what Mohit mentioned in terms of social listening, and there are a lot of variety of these tools available in terms of getting voice of customer to you in terms of what the customer is talking about you on the social footprint, etc. But to the larger point, to what you are asking is, what do we do with that data, right? And what, so it gives us a choice in terms of what the customer. So for example, somebody wrote on Twitter saying this is what my problem is. Now the growth oriented way to look at it is that I'm getting this data then and there. I can connect with the customer and solve it. And I think that's the approach that we take, because there's no point in going behind the fact that is it a bane or a boon. I think there's one unidimensional way to look at it, is saying, look, it's a boon, because in the yesteryears, this customer, for this customer to be heard through the management team, would have to go through reams and reams of letters or communication or that call center interactions or emails as it evolved. But here is what you get real time, and the challenge which we are trying to address is to have a complete machinery and a backend in terms of ensuring that this data or this feedback is responded to. And so I think it's a unique combination of using the tool, okay, using technology, as well as getting the right set of people behind it. Because end of the day, whatever a machine tells you, or whatever a platform gives you, there has to be somebody who is well equipped with those kind of empathy levels, with those kind of understanding to respond to these customers. What about you? So I think taking from what Abhijit said, I think we believe immensely in power of social, okay, and we started a journey a few years ago. So at a time when people said internet is the in thing, instead of writing long letters, sending handwritten letters to companies, we have a way of writing an email, which then evolved to a way of going on these message boards. I vaguely remember sites like Mouth Shut, complaint board forum, etc. People used to go and register and complain, etc. And now if you look at the trends, it is so easy for someone to wake up in the morning, you don't forget to check your Facebook and Twitter, but you always forget to brush your teeth. So I think that's the intimacy you have with these platforms, which means that it's very easy for you to use your phone and crib at the time you want to, or escalate something that you want to. I think we picked up on this particular thing, and one of the examples that Narayan took was, in case of life insurance, I've paid my annual premium and I need that receipt. If you don't give me that receipt, I will not be able to show it as a tax proof. So it's very, very important. A, you've taken my money, you've not even acknowledged. B, I have nothing to show to my organization or submit along with my tax papers. So that became a big crib. And we were listening and we were realizing that amongst all the issues that people had, there were top two issues. One was, I paid you, you did not give me a receipt. The other is, my policy is matured and you were supposed to pay me back. I have not got my credit, even though you promised. And we started looking at all these pieces. What we realized was, as we were going along, it was becoming very easy for us to interact with consumers. Because what happens is, when you send an email, it goes into the mass inbox. And then you have this customer service team, they will have queues and they will have their tats and they will then respond. And typically clinical responses come in. Social media, on the other hand, allows you to be personal and allows the customer to be intimate with you, right? And you have a one-to-one conversation and you are able to resolve, and you are able to at least neutralize, if not convert them into advocates, right? So you are able to resolve. So the trick is that you should be able to deliver a solution to them in the fastest possible manner. IIDA in our category allows 15 days of resolution time, right? I think social media allows us to do it in 3 hours. So if I look at my stats, my organization stats, average response rate that we have is 3.34 hours, right? So if you put something on the net, we will for sure close loop that with you in 3.5 hours. And if you are a customer of Exide Life Insurance, by all means try.
we've put immense might behind this entire piece. It's in fact an organization agenda that the power of social media is so huge that organizations need to put people, technology, and investments behind this piece. And one of the learnings that we got was the payment related piece. So what we've done is we've taken Twitter, because Twitter, Facebook, they allow you to on an automated basis chat with the platform. So you don't need to have people responding to active queries. You can actually create these bots and you can program them in a manner, depending on the keyword the party is throwing, you can throw a response. So we will be launching now. So we are currently testing, and this morning also I was testing the efficiency. Later this week we are launching something called Exide Life Cares on Twitter. Okay, so we've heard of Twitter banking, where you can just tweet and you can know your balance, you can transfer money. We are actually launching a suite of services, and this is basis our experience of listing on internet, which allows people to download receipts, which allows people to pay premiums, which allows people to change their contact details, and there are 7 other things that we are offering. I think all of this is a part of the kind of linking with the first point, that how are we listening, what kind of data is emerging out of this listening, and how are we translating that into service experience. So one of the foremost objectives that we have is, apart from trying to sell online, we want to serve our customers online, and I think that's where digital is helping us do it much more better in a much more intimate manner. Hello everyone. Let me begin with the Monetary Policy Committee decision, which voted in the favor of a status quo, and that was unanimous in nature. This was largely in line with market expectations. So what did change was the reverse repo rate, which was increased from 5.75 to 6%. So effectively it means that the corridor between the repo and the reverse repo, which was at 0.5%, now stands at 0.25%. Why was this required? Couple of reasons. A, the overnight rate, which is the rate at which the interbank transactions happen, had gone way below the repo rate and was trading at around the reverse repo rate. This could have meant an implied easing of rates, which is something which we believe RBI could have been wary of. Number 2, there is an excess liquidity in the system right now, which we believe RBI wants to gradually drain out. Is it likely to completely choke the system in terms of liquidity? The answer is probably not. But I think this band or the narrowing of the band would effectively mean slightly more orderly movement, especially at the short end of the yield curve. The markets obviously were expecting a status quo, so the impact was fairly muted as far as the short end of the yield curve goes. We saw an yields increase marginally in the band of about 5 to 10 basis points. The government securities market, or the G-Secs as we call it, had the biggest impact in terms of quantum of price fall or the yield rise. Now this was largely given the outlook table to us by the Monetary Policy Committee, which basically sees some upside risk to inflation. Of course, the FY17 or the March 2017 target for inflation has largely been met, but the FY17-18 inflation target has been broken into 2 halves. First half at about 4.5%, second half at about 5%. This effectively means that the RBI sees some upside risk to the inflation projections of being able to achieve the 4% mark. Now that obviously has not been good news for the markets,
And even more important is, given the uncertainty on the global economic variables, as also coupled with the monsoon effects, the inflation impact and the transient liquidity, the RBI believes that the rates will remain in neutral mode for some time now. We therefore believe that incremental rate cuts in the near to medium term could not be something which could be conceivable. What should therefore markets look forward to going forward? Expect the markets to remain range bound, in line probably in the band of about 5 to 10 basis points, given the kind of sell-off that we have already seen right now. The 10-year government security benchmark is almost at 6.8%. The good news here is that foreign institutional investors have been continuous buyers, not only in the equity markets but also in the bond markets. January year to date 2017, we have seen almost 1 lakh crores of inflows by FIIs both in the equity and the fixed income markets. In fact, in the first 2 working days of April alone, we've seen approximately 10,000 crores of FII flows into the bond markets. This, we believe, will keep the yield rise under check, with incremental buying coming in from foreign investors as also some investors in the domestic segment. What should be the outlook going forward and the strategies that investors should focus on? In this kind of a scenario, we have been quoting for quite some time that short-term or credit accrual-based strategies seem to be the best fit for an investor seeking exposure into fixed income. Ultra short-term kind of strategies also would probably be a better suited investment avenue over liquid funds, where the yields are at abysmally low levels, and we believe will continue to remain that way going forward. Should one look at duration funds like gilt and bond even right now? Well, we believe that these funds come in with inherent increased volatility given the longer nature of the duration that they have, and therefore a buy on dips could be a potent strategy, probably as a tail end allocation to your fixed income portfolio. To conclude, we believe that the domestic variables are broadly under control with no imminent negatives in the offing. Crude has been under control. Inflation has been fairly orderly. It remains to be seen how the global factors pan out, which will obviously shape the future course of the monetary policy in India. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Hello friends, as part of our continuous endeavor to be closer to our investors in order to share our market views on a real-time basis, we have started with a series of interactions that we will have with you on a monthly basis. As part of the first series, I'll be returns and enhanced security. This advice that empowers financial advisors to offer quality services is based on an understanding of numerous factors that influence the performance of financial products. Understanding that is gathered through a deeper understanding and solid analytics. Ifan, shaping tomorrow's financial planners. Independent Financial Associates Network, Ifan, is a B2B distribution platform for financial products that supports its associates to enhance their advisory and client services with the help of innovative technology and unbiased research. Established in 2005, Ifan possesses over 75 years of combined work experience in the financial industry. Ifan was founded with a vision to establish itself as a reliable partner for business growth and higher profitability that empowers financial advisors in India with a comprehensive range of investment products and services by being a one point of contact for all financial product and asset classes. Ifan offers a web-based B2B financial products and services platform where financial advisors and distributors can gain access to services like basket of products, research, financial planning, e-Nivesh, online wrap solutions, portfolio monitoring,
CRM, commission management, training, financial planning, and trailer monitoring. It serves as an efficient, low-cost play model for advisors to scale up their business in a standardized manner. Ifan also offers professional back-office services for product research, marketing, and legal and compliance. Ifan provides efficient line access to clients, enabling them to monitor all investments under one roof. Manufacturers can access Ifan's widespread professional associate network across the country. The greatest benefit that an associate of Ifan would hold is with Ifan's assistance, he would be in a position to grow his business both in quality and quantity. Ifan's research-based B2B platform offers various asset classes, covering mutual funds, debt, equity, real estate, home loan, LAP, and LAS to over 50,000 clients through a 1,000 plus dedicated associates network in 87 cities in India. The company has been ranked in top 50 distributors in India amongst over 90,000 distributors in mutual fund. Ifan also ranks amongst the top 5 distributors in company fixed deposit mobilization. Being a large institute and aggregator has an advantage to negotiate with financial product providers and thus offer higher short-term and long revenue to its associates. This also helps associates sustain their skilled manpower, thereby helping them increase their client base. As an associate starts increasing his network, he will have the potential to earn higher revenues across product classes. Ifan partners include a company that enables IFAs to gain greater efficiency and the ability to tap into economies of scale and at the same time help them deliver better service performance for their clients without increasing the cost. Ifan has taken the initiative to lead the change and facilitate a paradigm shift from the current sales-based advice to a more effective, advice-based sales model in the financial services sector. Ifan. देख कुछ होता है तो फोन कर। हाँ विकास, 1 लाख की जरूरत है। शर्मा, गुप्ता, सेन। क्या वर्मा, धंधा जोरों पर है? बड़े बड़े नंबर लिख रहा है, ऊपर 0 लगा रहा है। कहाँ का धंधा? 2 बड़े पेमेंट आने थे, एंड टाइम पर रुक गए। और जो फ्लैट मैंने बुक किया था, इस महीने उसकी भी पेमेंट आ गई। बेटे की फीस और इस बार पिताजी ने भी थोड़े पैसे मंगाए हैं। महीने के जो रेगुलर खर्चे होते हैं, दूध वाला, बाई, पेट्रोल, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह, वो तो वैसे ही हैं। ये खर्चे तो होते ही हैं यार। तूने ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है? सेविंग अकाउंट पूरा खाली कर देने के बाद भी ये सारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो पेमेंट रुक गए, वो अलग। बाकी पैसे कहां गए? सब उड़ा दिए? अरे नहीं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन इक्विटी फंड अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कुछ लॉक इन पीरियड में। ज्वेलरी कैसे बेच दूं? एफडी तोड़ूं या बॉन्ड करूं तो क्या करूं? अब तुरंत पैसे की जरूरत है। ओह, या तो पैसा सेविंग में या इन्वेस्टेड, लिक्विड में कुछ नहीं है। अरे सेविंग अकाउंट लिक्विड ही तो है। मतलब लिक्विड फंड ठीक जिंदगी के ऐसे मोड़ों के लिए जहां अभी तू खड़ा है। मतलब कि क्या? लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है। और एंट्री एंड एग्जिट लोड? लिक्विड फंड में जनरली कोई एंट्री एग्जिट लोड नहीं होता, तो इसमें एंट्री एंड एग्जिट लोड का नो प्रॉब्लम। तो फिर लिक्विड फंड का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि ट्रेजरी बिल्स और दूसरी शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज जैसे टर्म डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स इत्यादि में इन्वेस्ट होता है, जिसकी मैच्योरिटी 91 डेज से ऊपर नहीं होती। जब चाहो तब अपना पैसा निकाल सकते हो। और रिटर्न भी देता है? बिल्कुल। तो आज का किस्सा निपट जाए तो सबसे पहला काम यही करूंगा। और आज के लिए मैं तेरा लिक्विड फंड बन जाता हूँ। दोस्त भी तो लिक्विड फंड की तरह ऐसे ही मौकों पर काम आते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.
indexes are concerned. So both from an inflation perspective as well as from fiscal discipline perspective, we believe that the RBI will have the required comfort that will open up space for at least 50 basis points of further rate cuts from here on. What will aid the transmission of these rate cuts into the economy is also the significantly improved liquidity conditions that we see right now. Over the last 12 to 18 months, liquidity conditions in the system have improved significantly because of continued healthy FX flows, because of reducing pressures from currency in circulation, and also because we are seeing an improvement in financial savings. As we go along, we will continue to see a robust FX inflow environment, and also the fact that the government on its path of fiscal consolidation will also ensure that there is an impetus or there is a support provided to financial savings. Now that is the reason why we will see liquidity conditions improving. So better liquidity conditions along with a rate cut environment will essentially not only mean that yields come down, but also that the curve starts to bull steepen. And a bullish steepening of the yield curve has ramifications for products across the yield curve. From a Reliance Mutual Fund perspective, we believe that this is going to help in terms of performance of not only long duration products like the dynamic bond fund and the income fund, but we also think that it may help in terms of performance of intermediate duration products much more. For example, products like the short-term bond fund, the ultra short-term funds, as well as the corporate bond fund, vis-a-vis what we have seen in the last 12 to 24 months. Hence, we think that investors who are looking at various options of investments into debt products, depending on their risk return profile and depending on their investment tenors, can decide between these intermediate duration products as well as long duration products like the dynamic bond fund for investments that will most likely deliver good returns over the next 12 to 24 months. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Friends, the financial year 2015 has been a great year for equity investors. As the country heralds into a new dawn under the new leadership of Prime Minister Modi, and as the macroeconomic factors turn positive, we have also seen decent returns being made by equity investors in Indian equity markets. As we move forward to the new financial year, we move ahead with a lot of optimism as far as the economy as well as the equity markets are concerned. Our three pillars of optimism continue to be very, very dynamic and very vibrant. The first one is the macroeconomic factors turning positive. The second is the non-linear events, which is a fall in the crude prices, as well as a very robust governance, as well as focus on growth led by infrastructure, railways, defense, and so on and so forth. The third pillar is the earnings growth, and though the March quarter earnings are expected to be tepid, we expect in the next 3-4 years earnings to be quite robust. As we move forward, in the near term also, our view is that the markets might continue to show strength. The triggers for the near term obviously are passing of a few important bills which are likely in this month in the session of the Parliament. We also expect the earnings upgrade as far as the country is concerned, and we believe that it's a matter of time before India's ratings are improved. And the most important thing, as we mentioned earlier, is the earnings growth. We also believe that the government spending was rather timid in the last financial year should pick up pace as we enter the new financial year. With the fall in the crude prices, as also expectation of a slightly more robust taxation collection, we expect government spending led by infrastructure, railways, roads, defense to pick up meaningfully. This, along with a falling interest rate environment, should ensure that earnings growth trajectory comes back on track. We believe that that would be the biggest trigger as far as the equity markets are concerned. Thus, in short, from an Indian perspective, things look to be quite positive. From a global perspective, things have been a little volatile, especially earlier it was the Russian economy
and there was a wide swing in currencies with euro and British pound depreciating quite sharply. There were also concerns about stray countries here and there, including Greece. However, as we speak, things are starting to stabilize, and our view is that with a very easy liquidity scenario almost in all parts of the world, including Japan, China, Europe and US, money flow into Indian markets, both equity and debt, should continue to be robust. So even from a global perspective, things are looking quite good. In short, our optimism on the Indian economy and the Indian markets continue to be positive, and we would advise investors to continue to look at the Indian equity markets positively. Thank you and wish you a great financial year ahead. Happy investing and look forward to your support as always. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. What is a mutual fund and what are the benefits of investing in a mutual fund? Your financial requirements are likely to grow over time, and even though your income may grow at a steady pace, inflation will take its toll. Traditional forms of investments such as simple bank fixed deposits or investments in gold may not help you realize your dreams and goals. How do you derive the maximum benefit from surplus funds? How will your dream of buying a car, going on a holiday, or buying a house be realized? Mutual funds might be the answer. What is a mutual fund? A mutual fund is a collective investment tool that pools together money from many investors. These funds are then invested by a professional manager in various companies after carrying out considerable research. Mutual funds allow an individual to take part in the stock market without having to monitor its movements on a regular basis. The fund manager takes your money and invests in a wide range of stocks and investments or debt. The technique of Hello everyone. Let me begin with the Monetary Policy Committee decision which voted in the favor of a status quo, and that was unanimous in nature. This was largely in line with market expectations. So what did change was the reverse repo rate, which was increased from 5.75 to 6%. So effectively it means that the corridor between the repo and the reverse repo, which was at 0.5%, now stands at 0.25%. Why was this required? Couple of reasons. A, the overnight rate, which is the rate at which the interbank transactions happen, had gone way below the repo rate and was trading at around the reverse repo rate. This could have meant an implied easing of rates, which is something which we believe RBI could have been wary of. Number two, there is an excess liquidity in the system right now, which we believe RBI wants to gradually drain out. Is it likely to completely choke the system in terms of liquidity? The answer is probably not. But I think this band or the narrowing of the band would effectively mean slightly more orderly movement, especially at the short end of the yield curve. The markets obviously were expecting a status quo, so the impact was fairly muted as far as the short end of the yield curve goes. We saw an yields increase marginally in the band of about 5 to 10 basis points. Government securities market, or the GSECs as we call it, had the biggest impact for an investor seeking exposure into fixed income. Ultra short term kind of strategies also would probably be a better suited investment avenue over liquid funds, where the yields are at abysmally low levels and we believe will continue to remain that way going forward. Should one look at duration funds like gilt and bond even right now? Well, we believe that these funds come in with inherent increased volatility given the longer nature of the duration that they have, and therefore a buy on dips could be a potent strategy, probably as a tail end allocation to your fixed income portfolio. To conclude, we believe that the domestic variables are broadly under control.
with no imminent negatives in the offing. Crude has been under control. Inflation has been fairly orderly. It remains to be seen how the global factors pan out, which will obviously shape the future course of the monetary policy in India. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Investment saying so builders do not have any other here and still you are giving on these. So it's only a trust and a promise between the developer and the investor. But with REIT, we are looking forward that yes, it is managed by a professional body, and that is why maybe assured return thing will also go in time. You also have appreciation in terms of property value, so you will have not just an income stream coming from it, but also what your investment is, the value will go up. Do you like that part? In fact, as a financial advisor, I'm eagerly looking forward to the launch of REITs, which I don't see happening in the near future because the tax issues still have not got addressed fully. Some of it has got addressed in the budget, but not fully. REITs actually are very attractive because of two main reasons. Globally, if 90% of the income generated by the REIT is distributed, the income is tax-free in the hands of the investors. Which is a very, very big positive reason for global development of REITs. That still is not the case in India, so that's one of the reasons why REITs may not be launched in the near future. Secondly, as Mr. Arora said, today how many of us can afford 5 crore rupee worth of houses? Well, retail participation. I can participate in the appreciation of property with possibly 5,000, 10,000 rupees. Similar to mutual funds. I mean, how many of us can buy a highly priced share, whereas for mutual funds, you can invest 1,000 rupees and get participation in the equity market. So as a financial advisor, I would strongly advise or wait for REITs because of two reasons I mentioned. Liquidity is very high, taxation and the attractive returns which it can produce, because typically commercial real estate, as PIs mentioned earlier, has a yield of maybe 8, 9, 10, 11%. That plus maybe some capitalization you can get maybe 12 to 13% return. And in terms of risk profile of the asset class, it straddles between fixed income, which is sort of risk-free, and equity, which is high-risk kind of asset class. Any more questions? Yeah. This is Neeraj. My question is addressed to Mr. Ram. As a wealth advisor, financial advisor, how much? At an early age, where he requires to build an asset like a house for self-occupation, surely he needs to have a significant proportion of his wealth because of the affordability issues today towards real estate. So there will be a significant skewness of maybe 60-70% of his net worth in real estate between the years of maybe 30 to 40, 42. Until he pays off all the loans which he takes and then starts building financial assets. Whereas for a wealthy individual who has enough cash to spare, I would say around 25 to 30% is a fair number to be. He should have at least 30-40% in equities and 20-25% in fixed income. So that will be the asset allocation for a wealthy individual who doesn't have any cash flow issues, or who's looking to earn money or grow his money or build his wealth through investments. I have a question for Mr. He has a client because he's using technology, or I think he's selling a product which is available across the country, like mutual fund and some other wealth products. So that's why he's a client in Bombay, Delhi, Calcutta, Chennai, Doha, Dubai, whatever I discussed with Ram. So he's saying he's a client in multi-city. If any real estate consultant wants to offer same type of product, not same type of product, real estate product, because in right now, like Mr. Gupta rightly mentioned, now Chandigarh is property start from 5 crore to 15 crore and above. We also seen the same type of trend in Mumbai. Per flat, per room is equal to 1 crore. So now clients can't afford, maximum client can't afford, so they're going outside of Mumbai. So what type of channel you want to use to reach across the country, and your investors, those are in Chandigarh, they can invest other cities.
or what type of credential you want in particular platform? See, nowadays in a correction phase. So in Chandigarh, you can see which property in 2001 was only 62 lakhs rupees. So it stretched up to 2011, 9 crores. So little bit correction is there, say 15-20%. So there is big scope of investment in Chandigarh. Being a city, a planned city, and its atmosphere close to hill, close to capital of 2 states, and you can also investment in property. You can stay himself in the property and earn from the property, and earn from you can stay, you can rent out the same 1 crore, so you can earn also. So and second चीज है वो ये कि चंडीगढ़ एक ऐसा सिटी है जिसका के वर्ल्ड के ऊपर मैप में उसका चंडीगढ़ का नाम आता है। तो आप अगर कोई कंपैरिजन करेंगे जैसे पंजाब में किसी सिटी में जाते हैं या हरियाणा में किसी सिटी में जाते हैं तो यू कैन कंपैरिजन चंडीगढ़ इज द डिफरेंट फ्रॉम एनी सिटी लाइक इन द नॉर्दर्न सिटी इन द नॉर्दर्न एरिया। सो चंडीगढ़ में रिटर्न में जो कमर्शियल रिटर्न है वो इतनी अच्छी है कि 6-7% यू कैन रिटर्न फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टी, एंड उसकी जो एप्रिसिएशन है वो इस हिसाब से है कि इस लिमिटेड सिटी इसमें एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं है, जो सिटी बन गया वही है, एंड पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और जो फैसिलिटीज है चंडीगढ़ की अगर वो थोड़ा सा जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी पॉपुलेशन है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको कंट्रोल करे या लोगों को कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे बाईपास बनाए, फ्लाईओवर बने, तो मेरा ख्याल से चंडीगढ़ इज द बेस्ट सिटी टू लिव एंड टू बिजनेस। तो फिर चंडीगढ़ में कोई भी बंदा एक दफा आ जाता है तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, बिकॉज ही लाइक्स द सिटी, ही लाइक्स द एटमॉस्फियर। तो दिस इज द बेस्ट सिटी। तो इसके जो पुराने डाटा भी हैं, या जैसे हम कोई बेस पे किसी बेस पे बात करनी हो तो ये बेस इतने हमारे पास स्ट्रॉन्ग है कि जो प्रॉपर्टी की प्राइस 2000 में थी या 1990 में थी और आज उसकी एप्रिसिएशन है वो कई गुना है, 15, 20, 30, 40% तक उसकी एप्रिसिएशन हुई हुई है। तो इसी से एक ऐसा है कि वो जैसे ना सिक्का है गोल्ड का, तो यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा बहुत दिस इज द बेस्ट टाइम। इतनी करेक्शन इतनी इस टाइम हुई है, इससे मेरे ख्याल इससे और ज़्यादा रेट कम नहीं होने वाले। तो अभी दिस द बेस्ट टाइम अगर कोई करेगा तो उसको आने वाले 3-4 साल में काफ़ी अच्छी रिटर्न मिलेगी चंडीगढ़। Question is either addressed to Mr. Wali or Mr. Gupta. If somebody is a fresh investor, is an investor, not an end user. So would you suggest him a commercial property or residential property? Anyone can answer. देखिए दोनों में डिपेंड करता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर तो किसने रेंट के लिए प्रॉपर्टी लेनी है कि उसको मंथली इनकम ज़्यादा चाहिए तो ही कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी रिटर्न 6-7% तक आ जाती है। लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है उसको मंथली इनकम नहीं चाहिए। The financial advisory business is rapidly evolving from offering just sales-based advice to advice-based sales of financial products. Advice that ensures customers can avail of better performing financial products that offer higher returns and enhanced security. This advice that empowers financial advisors to offer quality services is based on an understanding of numerous factors that influence the performance of financial products. Understanding that is gathered through a deeper understanding and solid analytics. Ifan, shaping tomorrow's financial planners. Independent Financial Associates Network, Ifan, is a B2B distribution platform for financial products that supports its associates to enhance their advisory and client services with the help of innovative technology and unbiased research. Established in 2005, Ifan possesses over 75 years of combined work experience in the financial industry. Ifan was founded with a vision to establish itself as a reliable partner for business growth and higher profitability that empowers financial advisors in India with a comprehensive range of investment products and services by being a one point of contact for all financial product and asset classes. Ifan offers a web-based B2B financial products and services platform
where financial advisors and distributors can gain access to services like basket of products, research, financial planning, e-Nivesh, online wrap solutions, portfolio monitoring, CRM, commission management, training, financial planning, and trailer monitoring. It serves as an efficient, low-cost, plug-and-play model for advisors to scale up their business in a standardized manner. Ifan also offers professional back-office services for product research, marketing, and legal and compliance. Ifan provides efficient online access to its clients, enabling them to monitor all investments under one roof. Manufacturers can access Ifan's wide to negotiate with financial product providers and thus offer higher short-term and long revenue to its associates. This also helps associates sustain their skilled manpower, thereby helping them increase their client base. As an associate starts increasing his network, he will have potential to earn higher revenues across product classes. Ifan partners include a company that enables IFAs to gain greater efficiency and the ability to tap into economies of scale, and at the same time help them deliver better service performance for their clients without increasing the cost. Ifan has taken the initiative to lead the change and facilitate a paradigm shift from the current sales-based advice to a more effective, advice-based sales model in the financial services sector. Ifan. और बेटा सेटल हो गए नई जॉब में? सैलरी आ रही है ना टाइम पर? हाँ अंकल, देखिए ना, मैंने पहली सैलरी से ये फोन लिया था। नेक्स्ट मंथ की सैलरी से पूरा वार्डरोब चेंज, और सितंबर में ये वॉच खुद को बर्थडे गिफ्ट की थी। और तुमने अभी तक गाड़ी नहीं ली? बैंकॉक घूमने नहीं गए? अभी इतने पैसे बचते ही कहाँ हैं? बट अगले साल ये सब प्लान में है। और शादी? रिंकी के घर में तो अभी पता भी नहीं है, पर उससे पहले घर लेना पड़ेगा। रिंकी के पापा ना। लेकिन अगर अगले साल बैंकॉक, कार, तब तक ये फोन भी पुराना हो जाएगा। फिर एक और बर्थडे, एक और गिफ्ट, और तब तक रिंकी के पापा को पता चल गया तो ना आया घर, ना हुई शादी। तो क्या घड़ी होगी, कपड़े होंगे, शायद कार भी होगी। उसमें ही तुम्हारा दोस्त तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। तुम बैंकॉक चले जाना। अंकल, आप तो डरा रहे हो। ना बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें शादी से पहले घर लेना है और इसके लिए पैसे बचाने पड़ेंगे। न सिर्फ बचाने पड़ेंगे बल्कि इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आज मेरे पास सीमा भी है, घर भी, कार भी, और ये घड़ी मैंने लंदन से ली थी। अंकल, 2-3 हजार बचा भी लिए तो उससे क्या घर आएगा? 2-3 हजार कम होते हैं क्या? शुरू तो करो। बट इन्वेस्ट कहाँ करूँ? तुम शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गोल्ड, इन सब में इन्वेस्ट करो। अंकल, इन सब के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। इन सब में इन्वेस्ट करने का आसान तरीका है म्यूचुअल फंड्स। मतलब? तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को फंड हाउस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के मुताबिक अलग अलग कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। बट अंकल, ये सेफ तो है? म्यूचुअल फंड स्कीम्स को प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। इनकी कोशिश ही यही रहती है कि आपकी रिस्क कम करें और अच्छा रिटर्न दिला सकें। तो अंकल, देखा जाएगा, लगा दो दाव। अरे हीरो, यहाँ बात मरने मारने की नहीं है, इन्वेस्टमेंट की है। सोच समझकर। और जब रिंकी के पापा को पता चलेगा ना कि तुम ये सब कर रहे हो, अरे खुद तुम्हारे घर आएंगे बात करने के लिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. भी लॉन्ग टर्म है तो वो he can invest in residential property. Definitely the objective of the investment does matter, because कई बार क्या होता है कि फ्रेश इन्वेस्टर की फैमिली में एज ए यंग बॉय और यंग जेंटलमैन जो कल को उसको एक इंडिपेंडेंट हाउस की जरूरत पड़ सकती है, सो दैट इज मेड द रीजन न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है जॉइंट फैमिली से, सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन। एट द सेम टाइम वो जो उनका फैमिली के अंदर जो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कल वो उनको बिजनेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट आ सकती है स्पेस की, that is there, so that is because होता क्या है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसके पास ऑलरेडी 3 हैं 4 हैं, so it depends on his existing portfolio. So if he has a one kind of portfolio, then we can suggest him something that going forward, आज आप जॉब कर रहे हो, कल को आपका मूड बन गया, मैंने तो कंसल्टेंसी का बिजनेस खोल रहे हैं, बड़ा फील्ड,
So in that case, he needs an office space or he needs a commercial property. And at the same time, if he is, as of now, full of commercial, but is lacking of residential, so we can always, there are certain areas which are developing very fast, where the acquisition scope is much more. उन एरियाज में रेजिडेंशियल का रेट पहले ज़्यादा बढ़ेगा, कमर्शियल का बाद में बढ़ेगा, बिकॉज जब तक रेजिडेंशियल ऑक्यूपाई होगा फिर कमर्शियल का रेट बढ़ेगा. सो इफ द बजट इज इन दैट कैटेगरी, so we can go for the residential investment first, and probably when the residential does, then the commercial property can be bought. So it depends. It's not a suggestion which we can give to any customer. It will depend on doing the fact finding of the customer. We'll sit with the customer, seeing his affordability, seeing his existing portfolio. On the basis of that only we can guide him. No generalized statement can be passed. Yeah, Mr. Wali, Bombay के अंदर पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के एक नई बिल्डिंग बनती है, और जो पुराने लोग हैं उनको एक की जगह 2 रूम और उसके बाद 5 या 6 फ्लोर और बन जाते हैं. Because Chandigarh is also 1+2 टाइप ऑफ सिटी. यहाँ भी कोई गवर्नमेंट का या ट्रेड बॉडी की तरफ से ऐसा कोई प्लान है प्रेजेंट करने का कि चंडीगढ़ को भी रीडेवलप किया जा सके? Because land can't flow. चंडीगढ़ में किसी टाइम वो जब एक्ट आया था तो उसमें उन्होंने परमिशन दी थी कोई भी बंदा फ्लोर बना के फ्लोर वाइज उसको सेल कर सकता है, लेकिन वो अपार्टमेंट एक्ट किसी वजह के कारण सेव हो गया. उसके बाद वो अपार्टमेंट एक्ट से प्रॉपर्टी बिकनी या बननी बंद होगी. उस पर लोगों ने क्या किया कि जैसे इसकी शेयर बेसिस पे इसको बना के सेल करना शुरू कर दिया. 50% फॉर ग्राउंड फ्लोर, 30 and 20 आपस में एक एमओयू हो जाता है बिटवीन द पार्टी कि जिसके पास कौन सा फ्लोर है. लेकिन अगर अपार्टमेंट एक्ट आ जाएगा तो दैट इज द बेनिफिट फॉर द परचेजर. उसको क्लियरली मेंशन हो जाता है कि उसके पास ये वाला फ्लोर है, इतना कवर्ड एरिया है, और उसको बैंक लोन लेने में आसानी रहती है, और कोई उसमें झगड़ा पड़ने के चांसेस नहीं रहते. जैसे प्रॉपर्टी जो इसकी चंडीगढ़ में अभी अवेलेबिलिटी नहीं है या स्क्वीज हो रही है प्रॉपर्टी, तो उसके लिए अपार्टमेंट एक्ट हम तो डिमांड करते हैं कि आना चाहिए, ताकि जो लोगों का यहाँ प्रेशर बन रहा है रहने के लिए, उनको एक सेफ इन्वेस्टमेंट और लीगल हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट, और उनको इसमें कहीं झगड़े वाली चांस ना हो. तो अगर वो अपार्टमेंट एक्ट आ जाता है तो उससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे जेन्युइन बायर्स को. Thank you all. Thank you for the discussion. I think we break for chartered status for the real estate professional. I understand that chartered status in our country as of now is for accounts, like they are giving CAs and all. But even for purchasing, the certifications are available, like CPM. But then the chartered status is not clear for the same. Could you please put a light on this? Could you just repeat the question once? It is like chartered status in our country as of now is like for accountancy and all. We are saying chartered accountants, right? And even for purchasing, we have the certifications available like CPM. But the chartered status is still not clear for the purchasing in other countries. So my question is, for this particular this real estate professional, what about the status of this chartered? We are saying this chartered real estate professional, will it be valid in India? No, it's nice. Right. Like now, this certification comes from the trademarks which are have occurred in US. Yeah. So there they have the chartered status, and we have replicated it in India. Right. So you become chartered real estate professional across the globe once you do the program, right? Because the thing is, like in India, when you are in government, what they are doing, like CA, if we are saying chartered accountant, it is mandatory, right? So we will have to have the signatures of that particular chartered accountant. So how it comes about is, we offered a course called Chartered Wealth Manager. Okay. At that time there were no regulations. Right. Once the regulations came in, that course becomes one of the mandatory certification under SEBI Investment Advisor Regulation. So once regulations come here, we try our best to get it registered as one of the regulations approved course for the real estate industry also. It's an early advantage that you set in by getting a certification. Once the regulation or the regulatory body develops, you will find that they will make it mandatory for most of the people to operate in this business only if they have a certification. So we'll have to take that bet and start with it. Thank you.
Thank you all. Thanks. And